This is All India Radio. We now bring you a special bilingual panel discussion on Union Budget 2023-24, Direct Tax and Indirect Tax. The participants are Nitin Gupta, CBDT Chairman, and Vivek Johri, CBIC Chairman. AIR correspondents Ambrish, Saxena and Rajesh, Lekh, and journalist Shishir, Sinha are moderating the discussion. Good evening and welcome to discussion on the Union Budget. To discuss the direct and indirect tax proposals, we have Shri Vivek Johri, Chairman, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Shri Nitin Gupta, Chairperson of Central Board of Direct Taxes. A warm welcome to the studios of All India Radio. Thank you. Thank you so much. Shri Nitin Gupta. The FM has provided major relief in the personal income tax. Instead of me speaking, let's hear it from you. As there is a lot of talk about the new regime tweaking, which is announced by the Honorable Finance Minister, and the scheme provides for benefit to every section of the taxpayer, be it low income or medium income or high income. And the message which the Honorable FM has given that we are moving towards deduction and exemption free regime, and the benefit is up to 7 lakhs. If a person files return of income, the rebate would be given by the government, and tax payable will be nil for any income up to 7 lakh of rupees. If we include the benefit of standard deduction to salaried employees, because a lot of them could be salaried employees as well, then 1/3 of the salary or 50,000, whichever is less, will be further added to that. For the low income people, this is a very nice scheme to be adopted. Only caveat is that they have to file the return of income, which is existing as of now in the old regime as well, up to rupees 5 lakhs. From 7 lakh to 15 lakh, there is a variable amount of relief which will be available to the taxpayers if they are opting for the new regime, because the slabs have been widened and the number of rates have reduced from 6 to 5, so that benefit would be available. For a higher income bracket above 5 crore, the surcharge was 37%, which has been kept now at 25%. So the benefit is across the cross-section of people with income levels at their disposal. Okay, so this is more towards encouraging people to spend money. The savings would be the tax savings in the pocket of the taxpayer, and in the whatever way the taxpayer wants to use that money. If they want to invest, they can. If they want to expend, they can. Okay. So the choice is with the taxpayer. लेकिन आपको लगता नहीं कि कोई डिस्करेजमेंट होगा सेविंग्स को लेके लोगों में? डिस्करेजमेंट नहीं होगा. अब जो टैक्सपेयर है वो काफी चतुर है, वो काफी इन्फॉर्म्ड है और वो जानता है कि किस प्रकार से उसको अपने पैसे को काम में लेना है. अभी रादर ओल्ड रिजीम में वो फोर्स हो जाता है कि पर्टिकुलर तरीके से ही अपने पैसे को वो इन्वेस्ट करे. कोई एफटीआर में करना चाहता है, हालांकि उसका इंटरेस्ट रेट है वो उसको ठीक नहीं भी लगे तो भी उसको 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है मनी. सो नाउ देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी. तो वो कैसे पैसे को काम में लेना चाहता है वो ले, और उसको ये सरलीकृत हो जाएगा क्योंकि आमदनी बतानी है और उसको कोई खर्चा या डिडक्शन उसमें नहीं है. फॉर्म भी सिंपल होगा, उसमें डिस्प्यूट भी नहीं होगा. सब तरीके से ये बड़े ही बेनिफिशियल होगी. Would you compare the old regime and the new regime that you're talking about from a common man's perspective? Like I have said, up to 7 lakh, if a person is filing return, it becomes nil. As of now, it is 5 lakhs. Above that, at the income level of 15 lakh, the tax payable would be 1.5 lakh, as against 1,87,500 or something like that. So there is a benefit of around 25% or 20% into that level as well. But I believe income tax exemption from proceeds of insurance policies will also have a limit. The position is something like that till 31st of March, whatever policies one has will not be impacted. So the listeners needs to be clarified about that till 31st March, whatever policies you have is not impacted at all. So all these are grandfathered in tax terminology. From 1st of April, if whatever policies one take, the annual premium, if it exceeds rupees 5 lakhs, only then the taxability will come into play when the policy gets matured. So it is not going to impact the taxpayers. How many of us take policy where the annual premium is more than 5 lakhs? So it will impact those people who are high earners, not the low earner or middle income group people. When it comes to direct taxes, are there a number of proposals relating to rationalization and simplification of direct taxes in Union Budget?
The union budget, apart from the new regime which has come up, simplification is prescribed in certain other areas like cooperatives, the online gaming, which is an upcoming industry in India. Yeah. So there are slew of such measures where industry specific or specific to the type of entity these have been provided. What about the common IT return form? That we have already come up with a draft of the common IT return form, and we requested the stakeholders to submit us their viewpoint, their suggestions till 15th of December. So we got busy into the budget cycle, and now we'll start work on that, and we'll consider the suggestions. So what should a common man expect? See, the common man expectation, there are, as you know, there are 7 ITR forms. So it will be a Herculean task to put them together in the current year, means financial year 23-24, before the return filing season, because a lot of back-end activities are involved for quicker processing and then processing of refunds and all that. In a limited manner, if we can integrate few forms like ITR 1, 2, 4, because these are the common forms which are used by the individuals in HUF. So that will be our endeavor. अगर मैं गुप्ता सर एक सवाल आपसे पूछूं कि अभी तक जो पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में होता ही है कि जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं उस समय ये ऑप्शन देते हैं कि आप नए टैक्स रिजीम में हैं या पुराने टैक्स रिजीम में हैं। अब जब नई व्यवस्था आएगी जो कि AY25 से है, तो उसमें कब ये विकल्प देना होगा कि आप नए टैक्स रिजीम को अपना रहे हैं या पुराने टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं? ये विकल्प रिटर्न भरने से पहले ही आपको देना पड़ेगा। एक और सवाल यहाँ पर आता है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, चूंकि जो नया फॉर्म का जो मसौदा था आपने नवंबर में किया था, 15 दिसंबर तक आपने उसका कंसल्टेशन भी दिया था। अब क्या असेसमेंट ईयर 24 से वो लागू होना है या असेसमेंट ईयर 25 से वो लागू होना है? असेसमेंट ईयर 23-24 की जिसकी हम रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई में, हमारा प्रयास होगा कि हम कुछ फॉर्म्स को इंटीग्रेट कर सकें। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम इंडिविजुअल के फॉर्म्स को भी इंटीग्रेट कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को हो जाए। Shri Vivek Johri, in the indirect tax proposals that the minister announced, she emphasized on the simplification of tax structure with fewer tax rates. Would you elaborate on that? One of the major themes in this year's budget has been to simplify the rate structure, and it is now widely acknowledged that the lesser the number of rates you have, the lesser the chances of disputes, particularly with regard to classification, and arbitrage is also eliminated. So we've reduced the number of basic customs duty rates from 21 to 13, which is quite a substantial reduction, by merging some of the rates that have existed hitherto. That is one leg of the simplification that FM talked about in her budget speech. The other important one is the review of customs duty exemptions, because just like dispersal of rates leads to disputes and complexity in the tax structure, the more the exemptions you have, that also becomes a cause for an increase in the number of disputes. So this is a theme which has been abiding in the budget for the last 2-3 years, and last year particularly there was a very major review of customs duty exemptions. This year again exemptions have been reviewed, and some of them have been terminated because they've outlived their utility, and for some a decision has been taken to either continue them for another year, in some cases for another 5 years, because they're more enduring in nature. So this is also going to improve the tax administration. Absolutely. It's going to make life easier for the taxpayer and the importer, as well as tax administration, because there are fewer rates to administer. जिस तरह से जो आपने सिंप्लीफिकेशन की बात की, तो जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स हैं, ऑब्वियसली उनको उसका फायदा मिलेगा, बट ये आम आदमी तक इसका किस तरह का फायदा आप देख पा रहे हैं? आम आदमी के लिए भी फायदा ये होगा कि एक तो जो भी माल देश में आयात किया जाता है, हमारा यह प्रयास रहता है कि उसकी जो क्लियरेंस है वो त्वरित गति से हो, और जितने कम डिस्प्यूट्स होंगे उतना उस प्रोसेस को बढ़ावा मिलेगा, और उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कमी आएगी जो कि फाइनली आम आदमी तक पहुंचेगी। उसके अलावा काफी केसेस में कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि जो वैल्यू एडिशन है वो हमारे देश में हो, और उससे जो उत्पादन होगा फिनिश प्रोडक्ट्स का, उनसे न केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आम आदमी को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने से ये भी अनुमान है, जैसा कि हमारा अनुभव भी है पास्ट में,
उससे इन आइटम्स की कीमतें भी कम होंगी, जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचेगा। तो जैसा कि भारत सरकार की योजना भी है, मतलब आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए, तो उस दिशा में भी आपको लगता है कि इन कदमों से लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो मोबाइल फोन्स में हमारी नीति कुछ गत वर्षों में ये रही है कि हमने मोबाइल फोन पर एक ड्यूटी निर्धारित करके उसके जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल्स हैं उनसे कम ड्यूटी रखी है, इस आशय से कि जो मार्जिन ऑफ प्रोटेक्शन है वो मैन्युफैक्चरर को मिले और उनका उत्पादन भारत में हो सके। आपको याद होगा कि 8-9 साल पहले ज्यादातर मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट होता था, खास करके हाई वैल्यू मोबाइल फोन्स का, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था और मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि मोबाइल फोन्स का टर्नओवर देश में 2,75,000 करोड़ के लगभग पहुंच गया है और इसमें से 15% के लगभग हम लोग निर्यात भी करते हैं। तो मोबाइल फोन इस बजट में जो एक प्रस्ताव है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वो ये कि मोबाइल फोन की कुछ सब असेंबलीज ऐसी थी जिनके लिए हम आयात पर निर्भर थे अभी तक, जैसे कि कैमरा मॉड्यूल। तो कैमरा मॉड्यूल के कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जिन पर हमने इस बार कस्टम्स ड्यूटी में छूट दी है और उसका भी आशय यही है कि वो कैमरा मॉड्यूल्स भी देश में बन पाए ताकि वैल्यू एडिशन मोबाइल फोन। जैसे आपने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, तो जहां तक मैं समझता हूं, अगर नहीं तो आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा असेंबलिंग है देश में और ज्यादातर पार्ट्स हम बाहर से ही मंगा रहे हैं मोबाइल बनाने के लिए। तो जब तक वो पार्ट्स अगर देश में ही नहीं बनेंगे तो फिर कैसे बूस्ट होगा पूरा? नहीं, ये स्थिति अब बदल चुकी है। शुरू में जब इस नीति का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था तब जो आप कह रहे हैं वो सच था, लेकिन पिछले 8-9 सालों में इसमें काफी परिवर्तन हुआ है और हमारा प्रयास यही रहा है कि धीरे धीरे जो वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन जिसको मैं कहूंगा वो डीपन हो। तो पहले आप ठीक कह रहे हैं, हमने पहले चार्जर्स की असेंबली शुरू करी, उसके बाद चार्जर्स के जो पार्ट्स थे वो भारत में बनने लगे, फिर चार्जर्स का प्रोडक्शन पूरा भारत में होने लगा, उसके बाद हमने जो और उसके एक्सेसरीज थे उस पर जोर दिया, फिर मोबाइल फोन्स पर जोर दिया। मोबाइल फोन्स बनने की शुरुआत असेंबली से ही हुई थी, मगर अब ज्यादातर उसके पार्ट्स जो अगर आप उनका बिल ऑफ मटेरियल देखें तो ज्यादातर पार्ट्स भारत में भी बन रहे हैं और हाई वैल्यू मोबाइल फोन के पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, मगर जो बाकी मोबाइल फोन है उनका ज्यादातर का निर्माण देश में ही हो रहा है। You also have brought down the duty on the lithium ion cells used for batteries in electrical vehicles. So this is in sync with the EV promotion that the government has, or the focus is on the electric vehicles. So therefore, it is in light of that. Oh, you're absolutely right. This is one of the measures which is intended to encourage green mobility in the country and to augment the production of electric vehicles and the infrastructure for not just manufacture but also for maintenance and running of electric vehicles. So you mentioned green mobility. You have also exempt excise duty on GST paid on the compressed biogas. So that's a step in the right direction when it comes to green mobility. Yes. So the concern there was that compressed biogas, whose production has started in the country in a moderate way, that is normally blended with compressed natural gas, which in turn is used for green mobility. And since compressed biogas pays a GST, and then it is blended with compressed natural gas, which is liable to excise duty, there was double taxation. That was a concern which had been raised to us. So to overcome that double taxation, we've provided an exemption that you talked about. जौहरी सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सिगरेट में बहुत समय के बाद हमने जो नेशनल कंटिजेंसी फंड की जो सेस की बात करते हैं वो बढ़ाया गया है, इससे किस तरह की जो है वो हम आमदनी की बात सोच रहे हैं और इसके पीछे और क्या मकसद है कि जैसे चूंकि हम लोग सिगरेट को डिमेरिट गुड्स में इंक्लूड करते हैं, सिन गुड्स मानते हैं, तो क्या वो भी एक मकसद है कि इसका कंजम्पशन हमको डिस्करेज करना है? जी शिशिर, आपने बिल्कुल सही कहा। सिगरेट को नॉर्मली सिन गुड या डीमेरिट गुड माना जाता है और क्योंकि इसकी डिमांड इनइलास्टिक है इसलिए इट्स अ फेवरेट ऑफ टैक्स कलेक्टर्स, क्योंकि आप अगर इस पे टैक्स की दर बढ़ाते भी हैं तो रेवेन्यू भी उतना ही बढ़ता है। हमारे परिप्रेक्ष्य में आपने जैसा कहा, पिछले 3 साल से सिगरेट की एक्साइज ड्यूटी दर में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और यदि आप प्राइस इंक्रीज देखें तो मेरा अनुमान है कि अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए ही अकाउंट करें तो 16% जो हम लोग ने अभी वृद्धि करी है
उतना तो दाम बढ़ ही गया होगा। तो अभी हमको देखना ही पड़ेगा कि एक्चुअली इसके इंसिडेंस पर कोई इंक्रीज हुआ है या नहीं इफेक्टिवली। मगर इसके आशय दो हैं, एक रेवेन्यू रेज करना और करीब 1000 करोड़ के लगभग हमारा रेवेन्यू आएगा इस प्रस्ताव से। उसके अतिरिक्त हम लोग की नीति सिगरेट्स और टोबैको को लेके उसका कंजम्पशन कर्व करने की तो है ही, क्योंकि FCTC जो कि एक WHO का कन्वेंशन है उसके हम भागीदार हैं और कमिटमेंट है हमारा कि हम सिगरेट कंजम्पशन को कम करेंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी यह एक आवश्यक प्रस्ताव था। और एक बात जो हमेशा कही जाती है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब से GST लागू हुआ तो बजट में GST को लेकर के कुछ अम्ब्रेला लॉज की जरूर बात होती है जो GST काउंसिल के रिकमेंडेशंस के हिसाब से हो। लेकिन हमें ये अपने श्रोताओं को स्पष्टीकरण देना भी जरूरी हो जाता है कि बजट में GST की दरों को लेकर के चर्चा नहीं होती है, इसीलिए इस पर कोई विचार जो होता है वो नहीं होता है। इसके लिए हमें GST काउंसिल का इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या कुछ सिफारिशें करती हैं। आपका इस पर क्या कहना है? जी हाँ, GST परिषद दरों के बारे में रिकमेंडेशंस देती है राज्य सरकारों को और केंद्रीय सरकार को, जिसके बेसिस पर हम दर बदलते हैं या निर्धारित करते हैं। और क्योंकि GST परिषद की बैठकें पूरे साल होती हैं, हर क्वार्टर में एक बार बैठक होती है परिषद की, इसलिए वो एक ऑनगोइंग एजेंडा है, उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा GST की दरें आपको विदित होगा कि शेड्यूल और नोटिफिकेशंस के जरिए प्रकाशित की जाती हैं। तो फाइनेंस बिल में दरों को बदलना आवश्यक नहीं है GST में। लेकिन GST परिषद के जो भी निर्णय होते हैं जिनमें लॉ को बदलने की आवश्यकता होती है, वो बदलाव हम फाइनेंस बिल के थ्रू करते हैं। तो इस फाइनेंस बिल में भी आपने देखा होगा कि GST से संबंधित कुछ बदलाव हैं और वो वही निर्णय हैं जो GST परिषद ने अपनी पिछली बैठक में लिए। A huge impetus has been given to the youth to make strategic investments, Mr. Gupta. Would you elaborate how youth is encouraged and how startups are encouraged to be part of the new regime? Startups have been in focus and government is giving a lot of encouragement for new startups to come up, and the eligible startups which are there, the tax benefit has been extended from year ending 23 to 25. So that is the benefit which has been given to the new startups which may come up. So that is a positive sign. I think they extend the date of incorporation for Yes. income, that is That there, and 25. also the benefit to carry forward losses. Probably, I would candidly say that was an error which crept into probably when the amendment was made. It remained to be done, so we are now tweaking it out Taking care and of making that. it in that perspective. What about the MSMEs? MSMEs, there are twofold amendments in the Act. First is that small businesses up to turnover of 2 crores and professionals, specified professionals up to receipts of 50 lakhs have been provided with a presumptive taxation scheme where they pay at the rate which has been specified in the Act. That has been extended from 2 crore to 3 crores and for the specified professionals to 75 lakhs from 50 lakhs. So this is the 50% jump in a way from the existing turnover or receipt, subject to caveat that 95% or more should be through banking channels. So digitization is being given impetus, and we are saying that if your receipt are more than 95% from banking channels, a higher benefit would be available to you of turnover. That is the first part of it. The second is a lot of businesses don't pay the dues to MSMEs in the time which is contractual or otherwise under the Act, MSME Act. And so the MSME suffer because their capacity is limited, then working capital gets squeezed. So now the provision has been made that if any business doesn't make the payment in time as per the either contract or the MSME Act, whichever is less, then that deduction would not be allowed, so that timely payment could be made out to the MSMEs. So this is a provision which indirectly benefits the MSMEs. And if I add just one question about the tax collected at source, the two categories, one for buying the overseas tour package and one for, say, it has been written as any other, which could include buying property or buying stock abroad. The threshold have been removed in the first one, while in the threshold in the second is there, and the rate of tax is 20% in both the cases. Is it so high? The thing is that when a person makes remittance outside India, it could be for medical purposes or for education. These two are not touched. They so they have remain intact what it has been as of now.
Now the other sort of remittances could be on, as you have said, tours. I can go on a holiday vacation for a month or somewhere. The other, it could be investments outside India in any form. It could be gifts, where a person is gifting money to someone. So all these payments would now attract TCS at the rate of 20% as against 5% which was levied. गुप्ता, अगर आप कुछ इस बारे में बताएं, जैसे जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर हमेशा से ही लिमिटेड रहा है, काफी सारी सरकार ने कोशिश की उसके बाद, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना इस बजट में है जिसमें कि उस दायरे को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए? सरकार का हमेशा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग टैक्स के दायरे में आएं, और वो ही वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस का एक मुद्दा हमेशा रहता है, और उस तरफ लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं कानून के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हम काम कर सकते हैं उसके से। टीडीएस में जितने बदलाव किए गए हैं उनका प्रयास यही है कि एक ट्रेल रहे, ऑडिट ट्रेल उपलब्ध रहे, जिससे कि मालूम पड़ पाए कि कहाँ पे टैक्स कटा है तो वो टैक्स के दायरे में आ पाए। इसी प्रकार से हम बहुत सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, बैंक्स हैं या स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार हैं, और उस डेटा को कोलेक्ट करके टैक्स पेयर को दिखाते हैं। AIS में या 26 AS जिसको बोलते थे पहले और अब AIS बोलते हैं, वो दिखाते हैं। तो प्रयास यही है कि हम किस प्रकार से अपने टैक्स बेस को विस्तृत करें, और उस दिशा में TDS एक मुख्य माध्यम रहा है। तो प्रयास लगातार जारी है, और जितना हम टैक्स पेयर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, ईज ऑफ फाइलिंग रिटर्न कर सकते हैं, वो भी इसमें टैक्स पेयर को मदद करेगा। कितनी तेजी से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसका रिफंड अगर उसका ड्यू है तो वो हम दें, अगर हम उसकी कोई ग्रीवेंस है तो उसको रिड्रेस करें। तो ये एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो बोलते हैं, इफ वी कैन अडॉप्ट दैट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इन विच वी आर ट्राइंग टू डू, तो उससे मदद जरूर हमें टैक्स के दायरे में मिलेगी। अगर मैं नंबर टर्म्स में बताना चाहूं तो इस वर्ष हमको लगभग हमारा 5% के आसपास की ग्रोथ हुई है, जो कि हमें रिटर्न प्राप्त हुई है टैक्स पेयर से। लगभग 7.28 करोड़ रिटर्न हमें इस वित्त वर्ष में मिली है, जो कि पिछली बार लगभग 6.94 करोड़। मतलब ये टैक्स पेयर्स के नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं जी। हाँ, लेकिन रेवेन्यू का कितना इंक्रीज हुआ है प्रोपोर्शनेटली? रेवेन्यू जो हमारा है इस समय हम ग्रो कर रहे हैं ग्रॉस बेसिस पे लगभग 24% पे, और नेट बेसिस पे रिफंड देने के उपरांत, रिफंड हमने बहुत दिए हैं इस वित्त वर्ष में, लगभग 60% अधिक दिए हुए हैं रिफंड। तो उसको देखते हुए हमारा नेट ग्रोथ 18.5% है अभी। प्लानिंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल इन द टैक्स, encouraging them to pay tax and be part of the growth of the country. Definitely. But there are also grievances that a common man may have. How are you going to strengthen? Because the FM also talked about it, like they're going to have 100 joint commissioners for disposal of small appeals in direct tax matters. So how are you going to strengthen the grievance addressal mechanism? See, grievance could arise on any account, right, from application of PAN to refund, appeal effect. It could be relating to the pending appeal. So the scope is very wide for the grievance which may occur. Like as I've told, the faster processing of returns of income and quicker issue of refunds. Now that is the biggest area of grievance. And this year we have been able to tackle it. If you can recall, after 8 years, we did not extend the date of filing of return of income on any account, and therefore our processing had been very fast. So it is creating a positive impact on the taxpayers. इन रिफंड्स के मामले में तो वी वुड से कि इतना अच्छा तो शायद कभी भी नहीं था जितना फास्ट है, इस एस्टॉनिशिंगली फास्ट है, बहुत जल्दी रिफंड्स आते हैं। हमने पिछले पूरे वित्त वर्ष में 2,20,000 करोड़ के रिफंड दिए थे, और 31 जनवरी तक हम 2,60,000 करोड़ के रिफंड ऑलरेडी दे चुके हैं। तो वही हमारा कोशिश है कि जो बकाया रिफंड हैं, क्योंकि रिटर्न हमारे पास 31 दिसंबर को जो आई हैं और जिनका वेरिफिकेशन 31 जनवरी को हुआ है, तो उनके रिफंड हम दे पाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि हम जितने, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो नई रिजीम में जितना आपने सिंप्लीफाई किया है, तो जो टोटल नंबर है टैक्स प्लेयर्स का उसमें कुछ ड्रॉप आने की आशंका है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वन थिंग सर, CBDT and CBIC had data sharing mechanism, and how this has, I mean, my question to both of you, how this sharing mechanism has helped you, CBIC as well as the CBDT. Mr. Johri first. So in fact, there's a lot of resonance between what CBDT and CBIC are doing, and one of the things that I would also like to talk about is the growth in taxpayer base.
So, as you know, the taxpayer base in GST has more than doubled from the time we started, and it used to be 40 to 45 lakh, and we've already reached 1.4 crore. But when you compare it with CBDT, it's still very small, and we are aware of certain sectors where, we feel that the potential number of taxpayers is not being fully tapped. So, data exchange is a very, very strong means of achieving that. And we've been doing that data triangulation with CBDT, particularly for verification of PAN, for example. That is because, our identification number for GST is also based on PAN. So that is one area where we exchange data. But as part of the strategy to grow our taxpayer base for GST, we're also looking at exchanging, more robust data with CBDT for one, and customs for another. And like the GOM on IT, had recommended, some experiments are going on comparing the database of GST in a particular state with, let's say, the database of DISCOMs for electricity, because, that's a very powerful way of checking whether it's a business connection or it's a personal connection which is being used. Likewise, in Maharashtra, they're doing an experiment on triangulating data of GST with property tax data, because that is also a giveaway of whether a particular property is being used for commercial purposes or it's being used for residential purposes. So these are the various ways. And how CBDT is gaining on that? Yeah, CBDT, we are getting data of the turnover from CBIC, and we are populating that data in the AIS, so that the turnover which has been available with us in the database is populated to the taxpayer, so that there is a mismatch. We are capturing that mismatch for selection of cases, and for the mismatch cases are thrown to the assessee for verification, e-verification purposes, which has been introduced this year. So the results would be known, but the data is shown to the taxpayer that yes, this information is available, and if there is a mismatch, the taxpayer has to respond to that. So how much does trust and faith play in both the cases in CBDT and CBIC, from a professional, a personal or a company's point of view, and from your point of view to them? How much do you put the faith on the people that, okay, no, ठीक होगा, ये ज़्यादा इनके ऊपर शंका नहीं करनी है? See, whatever the taxpayer is disclosing in the return of income, we take it at what that it is truly and correctly disclosed. And that is the reason at one point in time all the tax returns were put to scrutiny, and gradually it is around less than 1% now which are picked up for scrutiny, and that too after a lot of rigorous process of identification of parameters for selection of case for scrutiny. So more than 99% returns, more than 99% taxpayers, that means to say, are trusted upon, and the cases are not picked up for scrutiny at all. And even where there is a case is picked up for scrutiny, as you know, it goes to faceless regime. We have processes are faceless for assessment as well as appeal. So I think the trust factor is tremendous as far as we repose trust in the taxpayer, and at the same time with the faceless regime, the taxpayer is having 100% trust on the processes, where you don't know who the person on the other side is assessing the case. So I'd quickly come back to the MSME, because they are the growth engines of our economy, and professionals are encouraged to avail the benefit of presumptive taxation. Could you touch upon that briefly? The presumptive taxation requires that one need not maintain any books of accounts, and then for the professionals, the tax which is provided in the Act is 50% or more. So it is up to the taxpayer to say that if my income is, let us say, as a professional is 50 lakh, then 25 lakh is the income offered. And then the books of accounts are not required to be maintained, auditing needs not to be done. And this time it has been proposed to be risen by 50% to 75 lakhs only if you have 95% or more from the banking channel. So for a honest taxpayer, a better dispensation is available for MSME on professional side or for the business side. Thank you so much, Mr. Johri and Mr. Gupta, for being with us and taking us through the direct and indirect proposals of the budget. Thank you so much for being with us. Thank you very much. Thank you. You were listening to a special bilingual panel discussion on Union Budget 2023-24, Direct Tax and Indirect Tax. The participants were Nitin Gupta, CBDT Chairman, and Vivek Johri, CBIC Chairman. AIR correspondents Ambrish, Saxena and Rajesh, Lekh, and journalist Shishir Sinha were moderating the discussion. The program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You could listen to it on our mobile app, News on AIR.
This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.